Am I audible, guys? Now audio video is clear. अभी ठीक है? Yes. Okay. Wonderful. पर मैं अभी चेक कर लेता हूँ फिर से। अभी सब ठीक है गाइस? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग? वीडियो तो मैं देख पा रहा हूँ, सही है। मैं भी चेक कर, ऑडियो भी ठीक है, चलो बढ़िया। So, shall we start our discussion now? If everything is fine, ठीक है? So, welcome to the session, guys. This is the session number 1 we will do in GATE 2025 Fluid Mechanics Shortcut Series, where we will simplify the concepts and crack the PYQs. This is something about me, teaching for GATE Chemical Engineering aspirants and PSUs since August 2013. So almost 12 plus years experience. Okay, these are my subjects which I will discuss. And today's topic in the first session will be introduction of fluid mechanics, fluid properties, rheological behavior, and Newton's law of viscosity. After that, we will discuss the PYQs from last 25 years on these topics, which they have asked in GATE Chemical Engineering examination. So if you guys are ready, just let me know. We will start the discussion. Hello guys, are you ready? Shall we start? यहाँ पे आप क्या बातें कर रहे हो? इज दिस सेम? कल भी मैंने बताया था ओरिएंटेशन सेशन में मिस्टर ए सीरीज कि almost 70% of the syllabus is same in chemical, mechanical and civil. बाकी तो जो आपका 30% एक्स्ट्रा सिलेबस है वो आपको मैनेज करना होगा। यहाँ पे आपका 70% पार्ट कंप्लीट सेम है केमिकल जैसा।
So if you wish, you can attend. Yes. Okay, wonderful. So let's start the discussion. As I have told you that we will discuss the topics quick revision in a quick revision mode, important concepts, their formulas, and then PYQs. Okay? So this shortcut series is basically your quick revision series plus rank improvement series, or you can say score booster series. तो आगे बढ़ते हैं. So what is fluid mechanics? You guys already know. And the people who have done the fluid mechanics, you can take these sessions as to help you make your short notes. Okay. So you know fluid mechanics is the study of fluid at rest or in motion. Okay. Now here we can classify the fluid mechanics in two categories as per your syllabus mainly, or in general as well. One is fluid statics and second is kinetics. And fluid statics is the study of fluid which are at rest. Kinetics further you can divide in two categories as kinematics and dynamics. Kinematics is the study of fluid in motion. So we just take care about the fluid and its motion, its velocity, nothing else. Okay. What are the causes and all? We don't care in kinematics. Dynamics is the study of fluid in motion along with the causes of motion. Okay. What are the causes of motion as well? Basically, the forces. Okay. So this is what fluid mechanics is. We can classify. Now further, if we move ahead in the study in the details, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आता है जो आपने पढ़ा भी होगा, that is fluid continuum. Fluid continuum. The fluid continuum is all about the study of fluids as a overall macroscopic body. ठीक है? Like you know, if we consider a system, suppose this is a part of fluid, a fluid is there, and this is one fluid element, and you know, fluid element is made up of many molecules, atoms. ठीक है? If you go on molecular level, atomic level, so you can feel like different molecules, different atoms may have different velocities or different properties, or otherwise you can also think like that there might be some gaps in between the fluid molecules, their atoms. As per the fluid continuum, they say, they assume that in this fluid element there is no gap. Molecules are present everywhere. Molecules are present everywhere. And the overall property of the fluid or element, you can say, will be same as their molecular properties. Okay? Means all the molecules have same property inside the element. If all molecules have same property, so you can understand overall property will also be same. This is the concept of fluid continuum. And the person who studied this and talk about this first was the Mr. Knudsen. And as per the Knudsen, they came with the idea of Knudsen number. Okay? Knudsen number, which is defined as lambda over L, where this lambda is termed as mean free path. I hope all of you know what is mean free path. Mean free path is the distance between the distance a molecule travel in the two successive collisions. Okay? In the system, you know, n number of molecules are there. If you consider any molecule, suppose this is the molecule you are taking as reference.
So this molecule will hit some molecule, let's say this one, so means it has the collision. Now after this, the distance traveled by this molecule before it hits any other molecule will be the mean free path. Okay, and L here is considered as characteristic length, or you can say characteristic dimension. Now, what is the meaning of characteristic length or characteristic dimension? That we will see later on in proper details. But here you can have a बेसिक आइडिया. ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं. कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से हमारा मतलब होता है इन जनरल इन फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच वी विल सी दैट द लेंथ or you can say the dimension that influences the flow. ठीक है, as fluid flows, so the length, the dimension which influence the flow, that is the characteristic length. Okay. uh, have you heard about the Reynolds experiment? I believe you have. ठीक है, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या था? There was a large reservoir of water and a long tube, transparent tube, and here they were having a valve. So as you open the valve, you know, fluid will start to flow in the tube. Initially, the flow will be laminar flow, and as you open the valve, the flow rate will increase, and it will become the turbulent flow. Okay, so I hope all of you have the idea of Reynolds number. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? इट इज एल वी रो ओवर म्यू, वेयर एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. फॉर दिस फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप, दिस डायामीटर इज एल. ठीक है, डायामीटर से हमारा मीनिंग क्या है? डायामीटर ऑफ पाइप इज बेसिकली, यू कैन थिंक लाइक द aperture size of the fluid element. Okay, like this is the fluid element, fluid is flowing, you know, this is the aperture size, aperture of the fluid. ठीक है, as you open the valve initially, when the valve is high, so मतलब very less open, okay, or you can say the laminar flow is there, so you know the aperture size of the fluid will be very small. And as you open the valve fully, you know, flow rate will increase, aperture size of the fluid will increase, and that is turbulent flow. So you can see the aperture size, basically the diameter of pipe, equivalent to the diameter of pipe, is causing the flow, influencing the flow. Similarly, आप लोगों ने अगर हीट ट्रांसफर वगैरह में, मास ट्रांसफर में बाउंड्री लेयर पढ़ी है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर. तो व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज ओवर अ फिक्स्ड प्लेट, you know, it is the boundary layer, fluid is flowing. So here, in case of fluid flow over a flat plate, what is the Reynolds number? You know, that is rho v x over mu. यहाँ पे जो L है, that is equal to x. अब x क्या होता है? You know that the distance from the edge. तो अगर आप डिस्टेंस ये ले रहे हो x, तो इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो यू नो द फ्लो विल बी डिफरेंट. एज यू कैन, यू नो द बाउंड्री लेयर थ्योरी, हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर में भी पढ़ी होंगी. यहाँ पे आपका लेमिनार रीजन होता है, देन सम ट्रांजिशन रिजाइम, देन टर्बुलेंट रिजाइम इज देयर, है ना. एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, द फ्लो इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. So this dimension, this length which influences the flow is called characteristic length. Is it clear, everyone? I hope these things are clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अरे बातें तो करते रहो भाई, ये सर ना कुछ तो बोलो. मैं यहाँ सिर्फ ऐसे करने थोड़ी आया हूँ. अगर ऐसा करना होता मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता. लाइव सेशन का बेनिफिट क्या है? कमाल है. What is the benefit of live session if you will not respond? Yes, okay, वंडरफुल. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर नटसन ने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने बोला कि ये जो वैल्यू है लैम्डा ओवर एल, व्हेन दिस इज लेस देन 0.01, ओनली देन वी विल से दैट फ्लूइड कंटिन्यूअम इज वैलिड. ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फ्लो इन दिस कंडीशन, वी फ्लूइड विल हैव द नो स्लिप कंडीशन.
ठीक है, this is the point when the fluid will be having no slip condition. तो as per your syllabus for of the gate exam BTech level, हमें सिर्फ नो स्लिप कंडीशन की ही स्टडी करनी है, ठीक है, इसके आगे की हम कोई बात नहीं करेंगे एज सच, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट इज आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, सॉर्टेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नो स्लिप कंडीशन से क्या मीनिंग है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा, बट स्टिल लेट मी गिव यू अ बेसिक आइडिया। सपोज दिस इज सम फिक्स प्लेट, fixed plate. So when fluid flows, suppose here some fluid is coming, so you know the fluid layer which will be in contact with this fixed plate, the first layer of fluid which is adjacent to the plate, which is in first contact of this plate, the velocity of this fluid layer will be same as the velocity of plate, means zero in this case. So this is what we call no slip condition. ठीक है, similarly suppose if we have a plate at the top of this and the plate is moving at a velocity of capital U meter per second, so the fluid layer, first layer of fluid which will be in contact with this top plate, the velocity of this fluid layer will be same as the velocity of plate, that is capital U. Okay, this is what we call no slip condition. तो no slip condition के लिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो that the relative velocity of fluid and plate will be zero. ठीक है, it should be clear to you, the relative velocity will be zero. हम ये नहीं बोलेंगे हमेशा कि fluid velocity is zero, no, relative velocity of fluid and plate will be zero, and now it depends on plate whether it is moving or is stationary. I hope this is clear to you. Okay, now the next is fluid properties. फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हमारी सबसे पहले अब बात आ जाती है, these are very basic things, so we will go little faster. Okay, I hope you understand all the things. First property is mass density. Mass, first is mass, and you know what is mass? Mass is the amount of matter present, exist in the system. ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी मास डेंसिटी, usually denoted by rho, and mass density can be defined as amount of matter per unit volume, which you can write as rho is equal to m over v. And you know the SI unit is kg per cubic meter. अब यहाँ पे जब डेंसिटी की बात करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 10 to the power 3 kg per cubic meter at 4 degrees Celsius and 1 atm as reference value for the liquids, and density of air is taken as 1 kg per cubic meter at STP as reference values. So these are the values, should be clear to all of you. Okay, next, weight density. So weight density is denoted by small w or gamma. In some literature, you will find the notation gamma, in some you will find the small w. So gamma is basically the weight of the fluid per unit volume. Okay, and you know what is weight?
that is mass into acceleration due to gravity. बेसिकली मीनिंग क्या है, वेट क्या होता है? आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड वेट इज द फोर्स exerted by that amount ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, दैट इज वेट. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट. तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो इंटू जी, मैथमेटिकली. एज यू कैन सी, एम अपॉन वी इज रो एंड रो इंटू जी, वेट डेंसिटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज specific gravity, which is denoted by capital S. And specific gravity can be defined as the density of given fluid to the density of reference fluid, which I have already told you. Like density of for liquid, it is water, 1000 kg per cubic meter, and for air, it is 1. And generally for solids also, we take water only. ठीक है, थोड़ा सा टर्म हिंदी में भी प्लीज. ओके, प्रयागराज. तो आपको जो टर्म समझ में नहीं आएगा आप मेंशन कर देना, आई विल एक्सप्लेन. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट डेंसिटी इन सबको तो हिंदी में नहीं बोल सकता मैं, घनत्व एंड वॉल थोड़ा अजीब हो जाएगा. ओके, आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर गाइस. नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी. These are the properties of fluid. Relative density is denoted by SR, or sometimes you can say small r only. ठीक है, तो इससे हमारा मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ अदर फ्लूइड. सपोज दे आर टू फ्लूइड्स 1 and 2. हमारे पास दो फ्लूइड है, फ्लूइड 1 एंड फ्लूइड 2, तो उनका जो डेंसिटी का रेशियो है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका प्रेशर. प्रेशर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल पी और समटाइम्स स्मॉल पी. तो इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है. सपोज वी हैव अ सरफेस, लेट्स से दिस इज सम सरफेस. लेट्स कंसीडर अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन दिस सरफेस. ठीक है, अ स्मॉल एरिया, लेट्स से दिस DA area or on this surface, and a force is acting on this surface. Let's say the force acting on the surface is F. So here you can understand this force acting on the surface will, you can divide, you can classify in two parts. एक काम करता हूँ, इस फोर्स को थोड़ा सा और वो ले लेता हूँ. Just give me a second. ठीक है, let's say this is the force F. So you know there are two components of the force which you can study. One, normal component of the force, and second, horizontal component of the force. Correct? So this normal component of force per unit area is known as normal stress, or you can say pressure. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए आपको. दिस वर्ड नॉर्मल स्ट्रेस वी विल यूज if this force is exerted by the solids, in case of solids, and the term pressure we will use in terms of, in case of fluids. तो फ्लूइड्स के केस में इसे हम प्रेशर बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस इसको, और सॉलिड्स के केस में नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं. एंड दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, पर यूनिट एरिया
is what we call shear stress. And this word is used for liquids, solids, and gases, all. The difference is clear between the shear stress and pressure, all of you? ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैथमेटिकली भी लिखना है तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे आपका this normal component of force per unit area, which was dA, and shear stress is denoted by tau. ये जो shear stress है इसे हम tau से denote करते हैं. It will be horizontal component of force per unit area. Okay, this is something about the pressure and forces, stresses. Now the next property, that is viscosity, which is also known as dynamic viscosity, denoted by mu. What is viscosity? All of you know that viscosity can be defined as the resistive force, or I should say the measure of resistance acting between the two adjacent layers of fluid during flow. During flow. ठीक है, इससे हमारा क्या मतलब है? सपोज फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस. So if you consider any two stress adjacent layers, suppose this layer and this layer, so you can understand these two layers are there. So these two layers will be having some resistive force. ठीक है, the bottom layer will try to resist the top layer to move ahead. So this resistance we measure in terms of viscosity. And viscosity is the fluid property, you should know that. It is a fluid property, but it will account only during the flow. Okay? If fluid is not flowing, it is a stationary, it is at rest, then we will not talk about the viscosity. ठीक है, तब हम उसकी बात नहीं करते. और ये जो विस्कोसिटी है इसके बारे में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए. द विस्कोसिटी फॉर लिक्विड्स, viscosity we define in terms of temperature as mu naught over alpha plus beta t plus, और क्या लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा रहने दो, a plus bt plus c t square. Okay, that's how we define the viscosity with temperature for liquids. And similarly for gases, viscosity is defined as mu naught plus alpha t minus beta t square. And here for gases, you should know that alpha is slightly greater than beta. Alpha is always greater than beta. और यहाँ पे अगर आप इनका ग्राफ चेक करोगे तो वो ग्राफ कैसा आता है? विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. ठीक है, वो कुछ आपका इस तरह से आता है. For liquids, and this is for gases. That's how you can understand. लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. वाई? इसे आप ऐसे समझ सकते हो
गैसेस के केस में, as you increase the temperature, kinetic energy of molecules increases. Thus, the number of collision between the gaseous molecules will also increase. That will cause the resistance between the layers, between the molecules, between the gas layers, gas molecules. Means resistance, means viscosity. I hope it this is sorted. है ना? अब इसके अलावा और चीजें अगर आपको समझनी है विस्कोसिटी के बारे में, तो इसे आप एक और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो। डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था, बट सिंस इट इज आर क्विक रिवीजन क्लासेस, तो हम वहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको आज एक क्लैरिटी रहे व्हाट इज द विस्कोसिटी एंड हाउ वी स्टडी ऑल दिस। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास कोई सॉलिड है। ठीक है, नाउ हियर इफ यू अप्लाई सम फोर्स एट द टॉप सरफेस ऑफ द solid, so you know the solid, due to the force, it will try to go in this direction. ठीक है, जैसे मेरे पास ये सॉलिड है सपोज, तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर, तो यू नो इट विल बेंड लाइक दिस, एज यू कैन सी द एजेस, दे विल गो लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा, लेट्स से 1 1। नाउ फर्दर if you keep on applying the force, it will further move like this, 1 2 1 3 1 4 like this. Ultimately इसमें क्या होगा, this is solid and solids resist the force. Solid has the tendency to resist the force, or you can say deformation. Basically यहाँ पे आप देख सकते हो, as we are applying the force, deformation is taking place, shape is changing. This is what deformation is. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप फोर्स रिमूव करते हो, on removal of force, solid will regain its original shape under the elastic limits. ठीक है, but if this force is goes beyond the elastic limits, so there will be permanent deformation or there will be a breakage. तो solid may undergo either permanent deformation or may not. ठीक है, बट अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, तो सपोज ये मेरे पास कोई लिक्विड है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे आप ऊपर अगर कोई फोर्स लगा रहे हो, तो ये चेंज होगा, but on removal of force, fluid will not go under, to fluid will not regain its original shape. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आइडिया है, फंडामेंटल, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो डिफॉर्मेशन आया, इसे हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल विच इज नोन एज थीटा, जिसे आप डिफॉर्मेशन बोल सकते हो या फिर shear strain बोल सकते हो. दिस इज व्हाट shear strain, एंगुलर डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ सॉलिड्स. बट फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है फ्लूइड के नेचर पे, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है. तो यहाँ पे हम shear strain की बात नहीं करते, हम यहाँ पे shear strain रेट की बात करते हैं, जो होता है आपका डी थीटा बाई डी टी, shear strain रेट डी थीटा बाय डी टी. और जब आप किसी सॉलिड के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर जब आप ऐसे अप्लाई करते हो, स्टडी करते हो, तो आपकी जो ये प्रोफाइल आती है, वो कुछ इस तरह से आती है. You know the velocity profile for a fluid, kind of a parabolic, something like this. And at any y distance, you can see. So, if you consider any two layers, so you can see that the top layer has higher velocity, bottom layer has low. So, suppose bottom layer has the velocity u, top layer has a velocity u plus du.
So here you can understand these are the two layers. The bottom layer is at lower velocity, top layer is at higher velocity. So what will happen? Bottom layer will try to resist the top layer because it is at low velocity. So it will exert some force on the top layer to resist the movement. ठीक है, क्योंकि बॉटम लेयर नहीं देख सकती कि टॉप लेयर उससे ज्यादा स्पीड से आगे जा रही है, जैसे रियल लाइफ में होता है. पीपल आर नॉट हैप्पी टू सी यू प्रोग्रेसिंग, बट इन द टॉप layer which is moving at higher velocity, it will try to carry the bottom layer along with it. ठीक है, it will try to drag the bottom layer कि भाई मैं जा रही हूँ तो जल्दी तू भी मेरे साथ चल, अच्छा दोनों चलते हैं. तो ये ग्रेट पर्सन है, ट्राइंग टू टेक अवे एवरीवन along with it. ठीक है, तो ये चीजें होती हैं. इस वजह से क्या टॉप लेयर एक फोर्स लगा रहा है बॉटम लेयर पे टू कैरी, बॉटम लेयर एक फोर्स लगा रही है टॉप लेयर पे टू रेजिस्ट इट. ठीक है, ये जो फोर्स दोनों लेयर एक दूसरे पे लगाती हैं, इन फोर्सेस की वजह से यू कैन अंडरस्टैंड अ स्ट्रेस डेवलप. ठीक है, इन दोनों फ्लूइड लेयर में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और वो जो स्ट्रेस है उसे आप इस वेलोसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से, वेलोसिटी ग्रेडियंट की टर्म्स में या शेयर स्ट्रेन रेट की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ज़्यादा, सो दैट वी कैन कवर ऑल दिस. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू डी यू ओवर डी वाई. और यहीं पर आप लोगों को अगर याद हो, हमने वो डेरिवेशन भी किया था वेयर वी सॉ दैट फॉर फ्लूइड्स द रेट ऑफ shear strain, or you can say shear strain rate, which is d theta over dt, was equal to velocity gradient du over dy. ये du over dy क्या है? आपका velocity gradient है. एक्चुअल में अगर आपसे कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है तो ये मत बता देना ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है, बट ओरिजिनल फॉर्म ये नहीं है. ओरिजिनली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? इट सेज दैट shear stress is proportional to shear strain rate. This is the original Newton's law of viscosity, जिसे मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी ओवर डी वाई होता है. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आपको पता है कैसे. ठीक है, दिस इज, एंड हियर दिस म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यू कैन से डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी ओनली. ठीक है, यू नो दैट. इज इट क्लियर? यस, ओके, वंडरफुल. अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आती है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज सरफेस टेंशन, यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा. सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन यू कैन डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड that causes its surface to shrink, or you can say contract, to the minimum possible area और वैल्यू. ठीक है, इससे हमारा क्या मीनिंग होता है, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं.
because it is important. Surface tension. So suppose आपके पास कोई container है like this, and here we have n number of fluid molecules. So suppose these are the fluid molecules. ठीक है. So do you understand the term cohesion? Cohesion means the attraction forces between the similar type of molecules. ऐसी एक टर्म आता है यहाँ पे adhesion. Adhesion is attraction forces between different type of molecules. ठीक है. जैसे water molecules cohesion, water glass molecules adhesion, like this. तो यहाँ पे क्या है, सभी molecules एक दूसरे को attract करेंगे. These molecules will attract each other, so they will exert some attraction forces. Like first, this will try to attract this will try to attract this. इसे थोड़ा और बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले. एक काम करते हैं, इसे ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा ऊपर जाने की नीड नहीं है. Just take few molecules. ठीक है. So here you can see these molecules will attract each other. Can you understand this diagram? नहीं आ रहा समझ में? अरे यार, एक काम करो, यहाँ ले लो मॉलिक्यूल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्सेस लगा रहे हैं. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस मॉलिक्यूल below this. ठीक है. In the bulk. In bulk phase you can see this molecule. If you look at this molecule, ठीक है, ये मेरा molecule है reference. So here you can see one force is pulling it on left side, one force is pulling it on right side. One is at the top, one is at the bottom, like this. So can we say the net cohesion force, n- net cohesion force acting on the molecule is zero? ठीक है. So this type of molecules are said to be in balanced cohesion. वो अपनी जगह से कहीं मूव ही नहीं करेंगे. जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे, जितना लेफ्ट जा रहा है उतना ही राइट. तो अल्टीमेटली दे विल स्टे. करेक्ट. बट इफ यू लुक एट द टॉप मॉलिक्यूल्स अबव दिस, व्हाट वी हैव, इसके ऊपर क्या है? ऑल दिस इज गैस. गैस ओनली. ठीक है. अब गैसेस है तो आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स के केस में हाउ मच फोर्स दे विल एक्सर्ट? स्लाइटली वेरी वीक फोर्स एज कंपेयर टू लिक्विड. गैसेस विल हैव वीक अट्रैक्शन फोर्सेस. करेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल फेस द अट्रैक्शन फोर्सेस आइदर इन साइडवेज और एट द बॉटम. तो साइडवेज में जो फोर्सेस हैं दे विल गेट कैंसल आउट. These sideways forces will balance. Correct. Sideways forces will balance, but downward force will be there, and this downward force due to cohesion will try to pull down the surface. मतलब आपका जो लिक्विड है आपको ऐसे दिखता है, क्यों दिखता है? जो टॉप सरफेस है it will be slightly bent because bulk molecules are trying to pull it down. Okay. So this, because of this reason, because of this cohesion, this surface will act like a elastic membrane. Surface will act like a elastic membrane. ठीक है. And the force acting on this surface per unit area, the surface tension force acting on this per unit area, sorry, per unit length is called surface tension.
फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ मीन्स दिस, जितनी सरफेस को आप स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, ठीक है। एंड दिस सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, और सिग्मा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो सरफेस एरिया है उसमें टोटल कितनी एनर्जी है, दैट इज व्हाट सरफेस टेंशन इज। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट लेंथ? द लेंथ ऑफ द इंटरफेस बेसिकली दिस, जैसे ये आपका एयर है, दिस इज लिक्विड, तो जो इंटरफेस है उसकी लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सरफेस टेंशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली द प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विड ड्रॉपलेट, लाइक रेन ड्रॉप इज देयर, तो लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर, दिस इज द लिक्विड ड्रॉपलेट, तो इसके अंदर कितना प्रेशर एग्जिस्ट करता है, गेज प्रेशर, ओके। तो यू नो दैट in terms of surface tension, how can we define? So that will be equal to 4 sigma upon d. D is the diameter of drop, करेक्ट। सेम इसमें आता है फिर आपका सोप बबल, जो सोप के बबल्स होते हैं उनमें कितना एग्जिस्ट करता है, उनमें जो सोप बबल्स होते हैं उनमें जो प्रेशर होता है दैट इज 8 सिग्मा अपॉन डी। एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। वाई? क्योंकि आपको पता है सोप बबल की जब हम बात करते हैं देयर आर टू इंटरफेसेस। सोप बबल में दो इंटरफेस होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट में वन इंटरफेस होता है। This is the liquid droplet. Only one interface is there towards the outside. So bubble में one is inside, one is outside. Two interfaces. So double of that. ठीक है। ऐसे इसमें तीसरा आता है आपका लिक्विड जेट। लिक्विड जेट, लिक्विड जेट से हमारा मतलब जो लिक्विड की जेट होती है लाइक दिस, पाइप से भी जैसे आप वाटर का फव्वारा करते हो वो। तो इस केस में जो प्रेशर आता है लिक्विड जेट में वो होता है 2 सिग्मा अपॉन डी। डी इज द डाया ऑफ लिक्विड जेट, करेक्ट। दीज आर द थिंग्स विच शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वेटिंग एंड नॉन वेटिंग मटेरियल्स। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग से हमारा क्या मतलब होता है? सी, दिस इज द सॉलिड सरफेस सपोज, नाउ दिस इज द लिक्विड ड्रॉपलेट, ये आपने किया। अब क्या होगा वेटिंग के केस में? कोहेशन फोर्सेस, एडहेशन फोर्सेस जो होते हैं, एडहेशन फोर्सेस दे आर ग्रेटर देन द कोहेशन फोर्सेस, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। Because of this, what will happen? This droplet will spread over the solid plate and become something like this. This is what we call wetting of the material. But in case of non-wetting materials, what happens? Adhesion forces are weaker than the cohesion forces. मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
तो उस वजह से क्या होता है, इस केस में जो सॉलिड प्लेट है उसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है, उनके साथ अट्रैक्शन कम है, तो मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट साथ ही रहते हैं, दे डोंट स्प्रेड ओवर द सरफेस। ठीक है, दिस इज द नॉन वेटिंग। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। अब इसी में आपका एक पॉइंट आता है, कैपिलरी राइज एंड फॉल। कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। सपोज ये मेरे पास कोई टैंक है, here we have the liquid, now we are putting one small diameter tube in this, inside the tank। ठीक है, और टॉप पे आप देखोगे तो ये हमारी फ्री सरफेस है लिक्विड की, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो व्हाट विल हैपन इफ लिक्विड इज वेटिंग लिक्विड है, like for example H2O in glass tube। Suppose this liquid is H2O and the tube is made up of glass. So what will happen? Liquid will try to wet the glass surface, and in that process, it will keep on rising, and ultimately it will reach a certain height. Okay? So this height gained by the liquid, this height gained by the liquid, कितनी height gain करी? तो you know that this height is 4 sigma cos theta upon rho g d. D is the diameter of tube. Theta is the contact angle. ठीक है, you know contact angle, this। If anyone wants to understand, we have discussed this in proper details in the detail course। ठीक है, वो आप वहां देख सकते हो। बट अगर हम कैपिलरी फॉल की बात करें, तो दिस इज द टैंक, दिस इज द लिक्विड। सपोज यहाँ पे हम लिक्विड ऐसे ले लेते हैं येलो से। अब यहाँ पे आपने ट्यूब रखी, तो व्हाट विल हैपन, logically the fluid level should be here only, till the same height, but what will happen here, since it is a non-wetting material, non-wetting liquid, ठीक है, for example mercury and glass, so here this liquid will try to non-wet the surface, मतलब it will try to detach from the surface, so it will start to fall, और वहां कुछ वो इस तरह से फॉल होगा। ठीक है, तो ये जो फॉल हुआ, दिस फॉल विच यू कैन सी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस। और इस केस में जो आपका थीटा होता है वो, यू नो व्हाट इज द थीटा इन दिस केस, दिस। सेम ही इक्वेशन है दोनों केसेस के लिए, फॉल के लिए भी राइज के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंगुलर कैपिलैरिटी। ठीक है, एंगुलर कैपिलैरिटी। एंगुलर कैपिलैरिटी से हमारा क्या मीनिंग है, सपोज वी हैव सम टैंक, लेट्स से लाइक दिस, हियर वी हैव द लिक्विड, now we have put it some glass tube inside this, so you know, let's say it is a wet case of wetting liquid, the liquid is rising। ठीक है, now inside this tube, if you put any other tube, if you put one more tube inside this, ठीक है,
इसके अंदर आपने एक और ट्यूब पुट कर दी, ठीक है। नाउ इन दैट केस व्हाट विल बी द राइज और समथिंग, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंगुलर कैपिलैरिटी, और वो आपका होता है 4 सिग्मा cos थीटा, यू नो व्हाट इज दैट, डिवाइडेड बाय रो g into d2 minus d1, ठीक है, diameter of outer tube minus diameter of inner tube, like this. So this is what we call angular capillarity. In this way we calculate the angular capillarity, ठीक है। I hope all these things are clear. अब इसमें लास्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी भी बात कर लेते हैं, which is denoted by nu. Kinematic viscosity is defined as the ratio of dynamic viscosity to the density of the fluid, ठीक है, and it is has the SI units meter square per second, and otherwise it has one more unit, that is Stokes, and you should know 1 Stokes is equal to 10 to the power minus 4 meter square per second. This is kinematic viscosity. ऐसी डायनेमिक विस्कोसिटी की भी यूनिट्स थी ना, वो हमने बात नहीं करी। कहाँ है डायनेमिक विस्कोसिटी, ये है, यहाँ लिख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ म्यू। तो म्यू की जो यूनिट्स होती हैं एसआई यूनिट्स, दे आर पास्कल सेकेंड्स, or you can write it as Newton per meter square seconds, or otherwise you can write it as kg per meter per second, ठीक है। Otherwise it also denoted by one more unit, that is poise, and you should know 1 poise equal to 1 upon 10 Pascal seconds, ठीक है। So this is the unit of mu, this is the units of kinematic viscosity, and it is also denoted as defined as momentum diffusivity, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। टाइम हो गया आज के लिए, तो दैट वी विल डू टुमारो along with the PYQs. Rheological behavior plus PYQs. And after that, if we get the time, then we will discuss fluid statics. Okay? Otherwise, in next part, we will discuss the fluid statics. So is it clear, guys? ठीक है, थोड़ा सा टाइम आज हमारा स्टार्टिंग में खराब हो गया, सॉरी फॉर दैट। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि क्लासेस जो हमारी ये हो रही हैं, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ वगैरह नीडेड है तो आप मुझे चैट पे बता दो, इफ यू नीड द क्लास पीडीएफ और समथिंग, और एवरीथिंग इज फाइन, नीडेड और नॉट, क्लास पीडीएफ इज नीडेड, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, दिस इज अबाउट मी, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मुझे पिंग कर देना, जो भी लोग हैं, कि यस वी आर डूइंग योर एफएम शॉर्ट्स कट सीरीज, so I will share the PDFs with you people. And if you need any guidance, or if you have any doubt regarding the subject or topic, so that also you guys can discuss. But do mention your full name, and yes, we are doing FM shortcut series. ठीक है? Otherwise आप बस बताओगे हेलो हाय, मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या कौन हो, है ना? तो इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। इज इट फाइन?
एम आई ऑडिबल और नॉट? आवाज गई? हेलो? है भाई आवाज? क्या रेस्पॉन्स ही नहीं देते यार आप लोग? इतने शर्मीले लोग हो यार, इतने शर्मीले लोग। अगर जीवन में और दो चार आ गए, क्या होगा दुनिया का? कैसे चलेगी ये दुनिया? वाई यू पीपल आर सो शाय? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी करें? जब आपका मन हो भाई। मैं इससे क्या पूछते हो? दैट इज योर चॉइस। ठीक है। बाकी जाने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये सीरीज हमारी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, डेली 10 PM। ठीक है। आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विद द टाइमिंग्स। अगर किसी को टाइमिंग का इशू है तो वो डू मेंशन, वी विल सॉर्ट आउट। हम इसे 9:30 कर लेंगे। अदरवाइज यही टाइमिंग रखेंगे, 10 to 11। इज दिस टाइम कंफर्टेबल विद यू पीपल? यस। ओके। वंडरफुल। तो जाने से पहले आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए गाइस, ये हमारे फर्स्ट रैंकर हैं लास्ट ईयर के, जो 7 रैंकर्स आए थे इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग केमिकल इंजीनियरिंग। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे 26 और 27 के लिए बैचेस चल रहे हैं, जिसमें सीआरई स्टार्ट हुआ है 13 दिसंबर से, सीटी स्टार्ट होगा 27 दिसंबर से। तो आप में से जो लोग 26 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपके कुछ जूनियर सीनियर्स करना चाहते हो, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, बैचेस आर गोइंग ऑन। ओके। और उन्हें बता सकते हो कि क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। आई विल गाइड देम कि कौन सा सब्सक्रिप्शन उन्हें लेना चाहिए, कितने मंथ का लेना चाहिए, आइकॉनिक लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए, और उनमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। गुड नाइट। सी यू टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक